Hello student, today we are going to discuss chapter 5 Morphology of Flowering Plant. Student, in live class we already discussed about flower, the structure of flower and the important four valves which is sepals, petals, stamen and carpel, which we call calyx, corolla, androecium and gynoecium. Today we are going to discuss the last topic of this chapter, which is floral formula. Here I explain a single family which is given in your NCERT book, but you learn all the families which is given in your book. So before starting this topic, floral formula, and we learn that how can we write the floral formula, we know the symbols. How can we represent calyx, corolla, androeciums, gynoeciums? Okay, so the symbols are that if the bract is present, so how can we represent this? BR. अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट है तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? BR. I already discussed about. If the bract is not present, अगर ब्रैक्ट प्रेजेंट नहीं है, then how can we represent? Then we write EBR. Okay, if the bract is present we write BR, that means bracteate. If the bract is not present we write EBR, that means E bracteate. Okay, calyx we represent by K, corolla we represent by C, perianth P. What is perianth? Student, in some flower calyx and corolla is not separated, it is in a single hole. That means आप आइडेंटिफाई नहीं कर रहे हैं कि ये कैलेक्स है या करोला है, क्योंकि आपको पता है कि कैलेक्स इज सेपल्स विच इज ग्रीन इन कलर, करोला इज द कलर पार्ट, द ब्राइटर पार्ट ऑफ द प्लांट्स विच वी कॉल द पेटल्स. किसी फ्लावर्स में कैलेक्स और कोरोला की जगह एक ही सिंगल होल्स होता है, वो है हमारा टैपल्स. ओके, दैट मीन्स कैलिक्स करोला जो है उनकी जगह पे केवल एक ही होल प्रेजेंट है, जिसे हम क्या बोलते हैं? टैपल्स. और टैपल्स को ही हम पढ़ते हैं पेरियंथ. तो इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से. ओके, पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय पी, एंड्रोशियम्स इज रिप्रेजेंट बाय ए, गाइनोशियम इज रिप्रेजेंट बाय जी. गाइनोशियम्स में हमने पढ़ा था सुपीरियर ओवरी एंड इंफीरियर ओवरी. Okay, and we discussed about that if the other part of the floral bud arise from the lower part of the ovary, then it is superior ovary. And we represent by, how can we represent this? We formed G, and here this is, we represent the superior ovary. Okay, and inferior ovary, how can we represent? By this. Okay, so these are some symbols. If one more thing, if the flower is unisexual and it is a male flower, then how can we represent? You make like this and this. This one is a male flower. Okay, the female, if it is unisexual and it is female, that means gynoecium is present, then how can you form? Like this. Okay, so it showing the male flower and it showing the female flower. That means here in a flower androecium is present, here in the flower gynoecium is present. If both are present, if flower is bisexual, that means male and female both are present, then how can you form this and the plus sign name? ओके, तो ये आपका क्या हो गया? बाइसेक्सुअल, सिंबल ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर. इफ द फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक, देन हाउ कैन यू रिप्रेजेंट? यू मेक द प्लस साइन इनसाइड द सर्कल. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड दैट फ्लावर इज एक्टिनोमॉर्फिक. इफ zygonomorphic, then the sign of %. Flower is zygomorphic. So there are some symbols to represent the specific part of a flower and the specific giving the specific knowledge about the flower, which we use to form the floral formula. Okay, here you can see that this is the floral diagram
and this is, here you can see that flower is bisexual, because here you can see that male and a female both, androecium and gynoecium both are present. तो यहाँ सिंबल कैसा है, बाइसेक्सुअल का. तो दिस फ्लावर इज बाइसेक्सुअल. कैलिक्स 2+2 के फॉर्म में है. दैट मीन्स कैलिक्स इज इन 2 and 2 forms. And corolla is 4. Here you can see 1, 2, 3 and 4. 4 corolla is present. Androeciums 2+4 के टर्म्स में. डाइएडल्फस कंडीशंस है. 2 बंडल्स है ना, सो 2 एंड इनर बंडल्स हैव 4. ओके, तो डाइएडल्फस. Androeciums represent A. Gynoeciums 2. Here in a bracket they write 2. That means bilocular and superior ovary. Dash है ना नीचे से, so superior ovary. We are going to discuss the first family which is given in NCERT book Fabaceae. Student, when we explain any family, we described about their vegetative character and reproductive characters. Vegetative characters, we have to explain root, stem, leaf of this plant, which include under Fabaceae. And in reproductive characters, we discussed about the flower. Okay, so firstly we are going to discuss the vegetative characters. Actually student, in Fabaceae the plant includes either tree, shrubs and herbs. Root with the root nodules, because Fabaceae family includes maximum leguminous plant, and you know that leguminous plants have a root nodules. Stem erect or climber. Leaves, alternate leaves are present, pinnately compound or simple, and venation is reticulate venations. Student, in leaf there is 2 type of venation, palar venations and reticulate venations. So here in Fabaceae family the plant include which have reticulate venations. Now we are talking about the floral characters. In floral characters, firstly we explain the inflorescence. I talk about that inflorescence. We discussed about the arrangement of a flower in the stem axis. So here in Fabaceae family the inflorescence type is racemose. That means flower is arranged in a acropetal manner. Racemose inflorescence. Flower is bisexual and zygomorphic. That means androecium and gynoecium both are present, because bisexual flower is there, and zygomorphic, it divided into 2 half. Calyx, which is sepals. So how many sepals are present here? 5. आपको flowers given होगा या आपको सेपल्स और पेटल्स बताए जाएंगे और आपको उनकी कंडीशंस राइट करनी होती है फ्लोरल फॉर्मूले में, कि सेपल्स अगर कैलिक्स अगर 5 हैं और वो गैमोसेपेलस है, यूनाइटेड है, तो हाउ कैन यू राइट इट? ओके, सो कैलिक्स दैट मीन्स सेपल्स. सेपल्स, हाउ मेनी सेपल्स आर देयर? 5. गैमोसेपेलस दैट मीन्स दे आर यूनाइटेड. स्टूडेंट, here you can see this is a flower parts of pea flower. Okay, here the calyx is gamosepalous. Why it is gamosepalous? Because the sepals are united. Okay, if they are free they are gamosepalous, but here the sepals are united, so it is gamosepalous. Okay, so how many sepals are present? 5. They are gamosepalous. So आप यहाँ फ्लोरल फॉर्मूला में देखिए कैलिक्स राइट हुआ है एंड दे राइट द 5. ओके, एनसीईआरटी बुक ओपन करिएगा, उसमें फ्लोरल फॉर्मूला राइट है. आप देखेंगे कि कैलिक्स तो 5 है एंड वो गैमोसेपेलस है, तो ब्रैकेट के अंदर राइट है. अगर फ्री होते तो हम केवल K5 राइट करते. कोरोला पेटल्स 5, अगेन पेटल्स 5 है. पॉलीपेटेलस है क्योंकि दे आर फ्री. पैपिलियोनेसी दैट मीन्स बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर consisting of the posterior standard 2 lateral wings, 2 anterior one, forming a kneel.
ओके। एंड विक्सिलरी एस्टिवेशन, स्टूडेंट हमने पढ़ा है कि विक्सिलरी एस्टिवेशंस में क्या होता है कि एक जो लार्जर पेटल्स है इट कवर्ड द टू लेटरल पेटल, और ये जो लेटरल पेटल्स होते हैं ये इंटीरियर पेटल्स को क्या करते हैं, कवर करते हैं, और इस इंटीरियर पेटल्स को हम क्या कहते हैं, कील। ओके, व्हाट वी कॉल इट कील. So this is a vexillary estivation. Here corolla, how many petals are there? 5, and they are polypetalous. Student, in this diagram you can see that 1 and 2 and this one is 3 and 4. How many petals are present? 4, and this one is keel petal. This one is also a petal. 5. How many petals are present? 5. And this one is a larger one which we call the standard petal, what we call standard petal, and this one is a wing petal, the lateral petal, and this one is a keel petal. So किस तरीके का इसमें estivations हमें दिखाई देगा, we can see the vexillary estivations like that. Okay, this one is a keel petals. Okay, now androecium vexillary estivation, student learn करिएगा. Androeciums, the male reproductive part, how many androecium are present? 10. Androeciums are present 10, but it is diadelphous. Diadelphous, what is the meaning of diadelphous? That means they are present, देखो overall 10 androeciums are present. Okay, they are arranged in a 2 bundle, that's why they are diadelphous. हमने पढ़ा है monoadelphous, if so many anthers are present and they are in a single bundle, so monoadelphous. Diadelphous, they are present in 2 bundles, 9 plus 1. Okay, 9 प्लस 1, 9 एक बंडल में होते हैं और 1 एक बंडल में है, तो 2 बंडल्स में एंड्रोशियम्स प्रेजेंट होते हैं. So because they are present into the 2 bundles, we called it diadelphous. What we called diadelphous. Here you can see that androeciums is 9 plus 1. Now gynoeciums, the female reproductive part, ovary superior, superior ovary. How can we represent the superior ovary? This is the superior ovary. And monocarpellary, only one carpel is there. Mono, that means one, so we write 1, monocarpellary, with many ovules and style stigma. Fruits, legume, seed, one or many. Okay, non-endospermic. So students, this is here, actually students you correct it, this one is zygonomorphic. So यहाँ पे इस तरीके का साइन आना चाहिए था परसेंट वाला, क्योंकि इसमें मैक्सिमम जो होते हैं वो zygonomorphic होते हैं. तो zygonomorphic. कैलेक्स हमने क्या पढ़ा कि हाउ मेनी कैलिक्स आर देयर, 5 कैलिक्स आर देयर, एंड द कैलिक्स आर गैमोसेपेलस and corolla is 5, but they are arranged, one is standard, then 2 are lateral, and the 2 is forming the keel wings. और एंड्रोशियम्स हमने पढ़ा था कि एंड्रोशियम्स 2 बंडल में है, डाइएडल्फस. सो द कंडीशन इज 9 प्लस 1. एंड गाइनोशियम्स हमने पढ़ा कि सुपीरियर ओवरी है, देन दिस वन इज अ सुपीरियर ओवरी. ओके, आप डैश कर देंगे. एंड यूनिलोक्यूलर, सो 1. ओके, सो यू करेक्ट दिस वन, ये नहीं आएगा, ये zygonomorphic है तो परसेंट का साइन आएगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ दिस इज अ फ्लोरल डायग्राम, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा. फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाए हैं, जो ग्रीन रिप्रेजेंटेशन है ये आपके क्या है, सेपल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. कैलिक्स को ऑब्वियसली 5 थे, तो 1 2 3 4 एंड 5. देन हियर वी फॉर्म कोरोला. ओके, दिस वन इज अ कोरोला. देन एंड्रोशियम्स, इट इज arranged into 2 groups. Okay, overall 10 is there. Then gynoecium unilocular है, so only 1 loculus is forming. Bract is present, so we form the bract. I hope you understand that how we write a floral formula. Okay, in my next video we start our next chapter.